Which one of the following rights is available under Article 19 Clause 1 Subclause D? Read with Article 21. इनमें से कौन सा राइट है जो कि हमें अवेलेबल है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के अंडर और उसको रीड किया जाता है आर्टिकल 21 के साथ में. आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन. Correct answer is C, right to privacy. Which one of the following does not fall within the purview of Article 21 of the Constitution? Medical aid to injure by a doctor, sexual harassment of women at workplace, pollution of quality of water, capital punishment. Correct answer is D, capital punishment does not fall within the purview of Article 21 of the Indian Constitution. Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? Right against exploitation. Right against exploitation में आपके दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, abolition of untouchability, protection of the interest of minorities, prohibition of employment of children in factories and mines. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 and 4. Article 23 prohibition of traffic in human beings and forced labor. Article 24 is prohibition of employment of children in factories and mines. ये दोनों आर्टिकल किससे रिलेटेड है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. करेक्ट आंसर इज 1 and 4. ऑप्शन सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कौन से प्रोविजन इंक्लूड होंगे? फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, right to wear and carry kripans by Sikh, states' right to make laws for social reforms, right to conversion of religion of people by religious bodies. Fourth statement is not correct. Freedom of propagation of religion is right. Right to wear carry kripans by Sikh is also right. States' right to make laws for special reforms. स्टेट जो है वो लॉज बना सकती है फॉर सोशल रिफॉर्म्स. करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3. Choose the correct answer from the given quotes. Correct answer is A, 1, 2 and 3. Next question is, according to Article 25 of the Constitution, right to freedom of religion is not subjected to public order, health, morality, humanism. Correct answer is D, humanism. According to Article 25 of the Indian Constitution, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion. But these rights have certain limitations. इन राइट्स की क्या है? कुछ लिमिटेशंस हैं. इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ. आपके पास ये सभी राइट्स हैं, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ इन ग्राउंड्स पे लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं. ह्यूमैनिज्म इज नॉट लिमिटेशन इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 25. नेक्स्ट, what are the restrictions in the freedom to manage religious affairs in the Article 26 of the Constitution? Article 26 में कौन कौन सी restrictions हैं? Public order, national security, education, morality, health, secularism. Correct answer is public order, morality and health. Option D is correct. Article 26 में क्या लिखा है? Every religious denomination or any of its section
शैल हैव राइट टू। हर रिलीजियस डिनोमिनेशन या फिर उसका कोई भी भाग, उसके पास क्या क्या राइट्स हैं? स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, own and acquire movable and immovable property, and administer such property in accordance with the law. The rights under Article 26 are also subject to public order, morality, health, but not subject to other provisions relating to the fundamental rights. आर्टिकल 26 के अंडर जो भी राइट्स हैं वो उन्हें पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, इनका ध्यान रखते हुए इस्तेमाल करना है. Under which article of the Indian Constitution wearing of kripans by Sikh is deemed as a right to freedom of religion? Article 24, Article 25, Article 26, Article 27. Correct answer is B. It is under Article 25. Article 25 of the Indian Constitution refers to right to equality, right to property, freedom of religion, protection of minorities. Correct answer is C. Article 25 of the Indian Constitution refers to freedom of religion. नेक्स्ट हमें बताना है कि कौन सा आर्टिकल सही मैच नहीं कर रहा है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर. आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज. आर्टिकल 26 freedom to manage religious affairs. Article 29 freedom of establishment and administration of educational institution by minorities. Correct answer is D. Article 29 is not correctly matched. क्योंकि freedom to establish and administer educational institutions by minorities is given under Article 30, not under Article 29. Under Article 29, there is provision related to the protection of interest of minorities. Next question. Which one of the following pair is not correctly matched? फिर से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा correctly matched नहीं है. Prohibition of traffic in human beings and forced labor. Article 23 is the correct one. Protection of interest of minorities under Article 29. Right to constitutional remedies. Article 32. Right of minorities to establish and administer educational institutions. अभी हमने देखा it is under Article 30, not 31. Correct answer is D. Under which of the following articles of the Indian Constitution it has been provided that all the minorities shall have the right to establish and administer educational institution of their choice? Article 28, 29, 30, 31. Correct answer is C. It is under Article 30. Consider the following statements. हमें इन statements को ध्यान से देखना है, consider करना है. Article 301 is related to right to property. No, it is 300A. Right to property is a legal right but not a fundamental right. Article 300A was inserted in the Indian Constitution by 44th Amendment during the period of Congress government. Which of aforesaid statement is are correct? Only 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3. 1 तो wrong है. Correct answer is only 2. Third one is also wrong. Article 301 is related to freedom of trade, commerce and intercourse, not with the right to property.
राइट टू प्रॉपर्टी कभी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट इन 1978 आर्टिकल 19(1) क्लॉज 1 सब क्लॉज F इज ओमिटेड, उसको खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 300A के अंडर राइट टू प्रॉपर्टी को डाला गया, जो कि जनता पार्टी गवर्नमेंट के टाइम पे ये अमेंडमेंट आया था, ना कि कांग्रेस के टाइम पे। इसलिए जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब एक सिर्फ लीगल राइट रह गया है, ना कि फंडामेंटल राइट। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। Which of the following rights can be enforced under Article 32 of the Indian Constitution? किन राइट्स को अंडर आर्टिकल 32 एनफोर्स कराया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स, ऑल ऑफ द अबव। Correct answer is B, fundamental rights. Which of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? Untouchability as a form of discrimination comes under right to equality. Article 17. Next, Indian Constitution does not give right to freedom of press, but it included in इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा डायरेक्टली नहीं लिखा है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, लेकिन इसको कौन से आर्टिकल के अंडर इंक्लूड किया जाता है? 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। करेक्ट आंसर इज ए, आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन does not give directly right to freedom of press, but it is included in Article 19, Clause 1, Subclause A, which provide right to freedom of speech and expression. Next, in which article of the fundamental rights to freedom of speech and expression is provided in the Constitution of India? Freedom of speech and expression कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 22? Correct answer is B, in Article 19. Next, freedom of newspapers in India. Freedom of newspapers in India, especially provided by Article 19, Clause 1, Clause A, Subclause A. It's secured under Article 19(1), Clause B, secured by Article 361A, has origin by the enforcement of rule of law. Correct answer is A. Freedom of newspapers in India, especially provided by Article 19, Clause 1, Subclause A. As a part of the right to freedom, which one of the following does not form part of freedom to assemble peaceably and without arms? राइट टू फ्रीडम का पार्ट होने के नाते इनमें से कौन सा ऐसा है जो फ्रीडम टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स का पार्ट नहीं है? घेराव ऑफिशियल्स नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, पीसफुली असेंबली, people who assemble should not bear arms, state can make a law imposing reasonable restrictions on the exercise of this right. Correct answer is A. Gherao officials not performing their duties. By which of the following grounds a citizen's freedom of expression may not be subjected to restriction? इनमें से कौन सा ग्राउंड है जो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है किसी भी सिटीजन की फ्रीडम पे? Sovereignty of India, public order, contempt of court, unbecoming criticism. D. All of the above. Correct answer is D. Unbecoming criticism. Sovereignty of India, public order, contempt of court, ये सभी subjected to restriction है. Which article of the Constitution of Indian Republic relates to the protection of life and personal liberty? Protection of life and personal liberty comes under which article? Article 21.
Next question. In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? पॉलिटी के कंटेक्स्ट में इनमें से आप किसको मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन मानेंगे लिबर्टी की? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप oneself fully. सबसे सही लिबर्टी की डेफिनेशन कौन सी लग रही है? करेक्ट आंसर इज डी,